Two points subtends equal angle at two other points lying on the same side of line containing the line segment. The 4 points lie on the circle. A line joining 2 points subtends equal angle at two other points. Now the line joining 2 points subtends equal angle to at some other points. Then we have to prove that all the points A, B, C, D lie on the same circle. Now we are given that angle CAB is equal to angle CDB. Now we have to prove that A, B, C, D all lies on a circle. So let's construct a circle using any 3 points. So we will construct a circle using A, B and C. Suppose that D is not on the circle. Okay. So there would be a point through which this will pass, the circle will pass. So let that point be D dash. Now एंगल CAB अगर वो सर्कल से पास होता है तो वो सेम सेगमेंट में हो जाएंगे. ठीक है, मतलब CD' विल बी इक्वल टू CAB. ठीक है, बट अपने को क्या बोल रखा है कि CAB किसके बराबर है, CDB के बराबर है. इसका मतलब कि सेम सेगमेंट में है वो दोनों, तो ये दोनों पॉइंट्स को ओवरलैप कोइंसाइड करना पड़ेगा, राइट. सो D and D' कैन नॉट बी डिफरेंट पॉइंट्स, राइट. सो all ABCD will be on a same circle.